EM log, electromagnetic log. This is another SDME. The term on board ship, which is used for the devices which give you the speed and distance done, is referred to as SDME, speed and distance measuring equipment. When you look for performance standard, you'll find it for SDME, not separately for EM log, not separately for Doppler log, but speed log or SDME. On the ship, we have different kind of devices which give us speed. One of them is Doppler log, another one is EM log, another one is something called pressure log. Of course, GPS also is providing us a speed, but GPS ka main function is position fixing. So we are not taking GPS as SDME out. Another one which is out is the pressure log. It is obsolete now, not used because of its complications, and we generally don't find this speed log on the ship. मौका लगेगा तो एक लाइन मतलब 2 मिनट बात कर लेंगे कि क्या थ्योरी क्या है उसका, डिटेल में बात नहीं करेंगे, जनरल थ्योरी बात कर लेंगे थोड़ा सा. So that leaves us with Doppler log and EM log, which are the major devices providing us the speed. Why do we require two kinds of devices? एक से क्यों नहीं हो सकता काम? Can somebody give me some input? Why do we require two kinds of speed logs? एक से क्यों नहीं काम चल सकता? Speed through water. Speed through water and speed over ground, sir. Speed over ground and speed through water, sir. दो अलग-अलग. Very good. Very good. That's what I wanted to hear. We have two kinds of speed in the ship: speed through water and speed over ground. Now, I would want to know from you whether you know or understand the meaning. Do you feel it in your screen? Whether what is the difference between the two? Is it 100% clear conceptually? What is the difference between the two? What is the speed through water? Why do we use it? How it happens? What is speed over ground? What is the logic? What is the use? Why and why and why of the different kind of speeds? Is this concept totally clear? सिर्फ मुझको एक करंट और करंट को कंसीडर करता है, एक को नहीं करता, ऐसा खाली मत बोलिएगा. आई वांट यू टू नो, आई वांट यू टू टेल मी एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ. हाँ जी, नहीं सर, मतलब करंट वाला ही पता है मोस्टली सर जो बोलते हैं. ओके, तो एक होता है, एक बोलते हैं कि दिस कंसीडर्स टेक्स इनटू अकाउंट द करंट आल्सो इफेक्ट ऑफ करंट, अदर डज नॉट टेक. यही बोलेंगे मेरे ख्याल से, सब लोग यही बोलते हैं. स्पीड थ्रू वाटर सर, एक्चुअली जहाज पानी थ्रू चल, वो स्पीड थ्रू वाटर हुई, कितना पानी काट रहा है वो सर. ओके, पानी काट रहा है, दिस पॉइंट इज गुड. कितना पानी काट रहा है, क्यों चाहिए भाई पानी काटने को? मुझको क्या करना? कितना पानी अपने हाथ से पास कर रहा है, दैट इज द स्पीड थ्रू वाटर. बहुत अच्छा, स्पीड थ्रू वाटर पानी पास हो रहा है, बहुत अच्छा. क्यों चाहिए मुझको वो? सर कोलिजन अवॉइडेंस. सर कोलिजन अवॉइडेंस. कैसे? डू वी अंडरस्टैंड रियली हाउ इज दिस कोलिजन अवॉइडेंस happening or not happening? Yes sir, yes sir, because मूवमेंट है वो बता रहा है सर. वो एक्चुअली जहाज पानी में कैसे one at a time. अंकित ए से क्या? आर्या आहूजा सर, आहूजा. ओके, अंकित आहूजा, प्लीज डू यू स्पीक. सर स्पीड थ्रू वाटर, जहाज पानी में एक्चुअली कैसे चल रहा है वो बताएगा, तो उससे दूसरे जहाज से हम कैसे पास होंगे वो स्पीड थ्रू वाटर से मालूम पड़ेगा, तो वो कोलिजन अवॉइडेंस में हमारा हेल्प करेगा.
आपने सही कहा. Explain this situation not in the sea elsewhere. कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए जिससे मुझको आप ये समझा सकें कि दिस इज हाउ स्पीड थ्रू वाटर आल्सो वर्क्स. स्पीड थ्रू वाटर हेडिंग लिंक्ड होता है, एस्पेक्ट लिंक्ड होता है. तो आप कोई भी एक्शन लेते हो तो एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं. वो तो लेते हैं, कुछ होगा तब न लेते हैं. तो रुके हुए जहाज पे, एंकर जहाज पे स्पीड होती है कभी, वो थ्रू वाटर हो थोड़ी बहुत स्पीड होती है, ओवर ग्राउंड नहीं होती उस टाइम करंट की वजह से. सही बात है, ये भी बात सही है. व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट मोहित एंड समबडी एल्स आल्सो सेड कि पानी बह रहा है साइड में. स्पीड ओवर ग्राउंड पे जीपीएस स्पीड शो कर रहा है, आपका इंजन मूव करेगा तो स्पीड ओवर ग्राउंड दिखा देगा, स्पीड थ्रू वाटर आपको करंट दिखा देगा. जब हम लोग आरपा यूज करते हैं तो सर उसमें हम लोग जो प्लॉटिंग होती है सर वो स्पीड वाटर के अकॉर्डिंग ही होती है, उसमें स्पीड ओवर ग्राउंड का फीड नहीं होगा. एक सेकेंड, आप स्पीड थ्रू वाटर भी उसमें ले सकते हैं, आरपा में स्पीड ओवर ग्राउंड भी ले सकते हैं. तो There is, सकता है there are सर more sea stabilization. One second, Ayush. One second. There is sea stabilization mode of ARPA. There is ground stabilization mode of ARPA. In two different modes, we use two different kind of speed inputs, and also the courses that we are doing. For plotting position, for ARPA, basically for radar plotting, we require three inputs. We need range and bearing, we need the speed of the ship, we need the course. Yes. When we are sea stabilized, when we are sailing out at sea, that means nothing, no fixed object available, no ground object available, only water everywhere. Then we go into sea stabilized mode. That's where we use speed through water for collision avoidance and heading for collision avoidance. But if you are in coastal area and there is a lighthouse or a buoy and you want to see your navigation with respect to buoy, आप चैनल में जा रहे हैं, आप buoy के नजदीक जाएंगे, दूर जाएंगे, then you are not using speed through water. In ARPA, you are using speed over ground stabilization mode. ओके सर, अंडरस्टूड. अग्री सर, क्योंकि कोस्टल में एक्चुअल शिप मूवमेंट चाहिए होता है कि एक्चुअल में जहाज कहाँ जा रहा है. Okay, so we will take 5-10 minutes for discussion on this topic, the difference between speed through water and speed over ground. Okay, आप अपनी जगह सीट पे बैठे हो, आयुष, मोहित, सुशील, ऋषभ, अंकित, everybody is sitting. Are we colliding with each other? नो सर. No, sir. No. Are we moving or not? No, Are we moving or not? no colliding. Are we No, moving we are or not moving. नो We सर. are No, not- we are not moving, sir. Not moving, sir. Okay, we are not moving. Then why is this day and night happening, and why it is winter and summer happening? With respect to sun, we are moving, na? Sun के around तो हम लोग चल रहे हैं ना? We are moving right now at 67,000 kilometers per hour. Sitting here, I am moving on the earth, with the earth. I am moving at 67,000 kilometers per hour. Yes, But- sir, but Not colliding. Why? Because wait, we are not moving on the earth. So if we have two ships floating in the water, one ship and the other ship, if the water is moving, they both are moving. If I am watching them from a lighthouse, if I watch, I see them moving, but within themselves they are not moving. If this is water, there is a floating object, another floating object. They will collide only if they move in the water. When they will collide depends on their speed. Will they collide or not will also depend whether what kind of heading, दूर निकल रहा है कि किस तरफ को जा रहा है पानी में. But if the water itself is moving, they are not going to collide. But I am seeing them move. I am a ground object not moving. This is water moving.
in the water, these are two floating objects. I am seeing the water go, I am seeing the objects go by. So they are going to collide only if they walk in the water or move in the water. So for collision avoidance, they are movement in the water, सर force and In- speed. इंजन इस केस में जो आप बता रहे हैं सर, इंजन चल रहा है ना सर? हाँ. ओके सर, ठीक है सर. So if this is floating, no engines. This is floating, no engines. That's engine dead. But if there is a current, they both are moving at the same current. Both are moving like this. I am watching them go. Same speed, same direction. They are not colliding. But suppose they are moving like this, will they collide with me or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So from the ground object, I am seeing they are going to strike the ground. They are on the boy. They are going to touch the boy because they are moving with respect to boy like this. But आपस में दोनों नहीं मूव कर रहे. दोनों अगर फ्लोटिंग है, करंट का इफेक्ट दोनों के ऊपर बराबर है, नेट इफेक्ट 0. दोनों चल रहे हैं. I am from the ground, I am seeing them move by 2 knots. 2 नॉट का करंट है. दोनों को मैं देख रहा हूं कि 2 नॉट से जा रहे हैं. आपस में नहीं टकराते ये. No movement through water. But with respect to ground, which is not moving with water, they can come and collide with me. So I have to watch my what kind of speed. Speed over ground. Speed over Yes. Ground speed. Speed over And ground. whether they will collide or not will also depend if the ship is going this way or this way or this way or this way. course or ground. Course over. So coastal navigation, where we have land objects, we see our movement, how we are moving with respect to that fixed thing. The shoal, shallow patch, am I going close to it? I may be heading like this. My heading is like this, but I'm moving like this. Will I collide with the camera or not? Yes, sir. Because the camera is fixed, I'm moving. There is a current which is pushing me. I'm not moving, but current is pushing me. Although my heading is this, but I'm moving like this. So I will collide with the camera. So in coastal water, I observe my movement over ground. Out at sea, no ground object, only floating object. दोनों के ऊपर करंट का सेम इफेक्ट. ये इधर तो दोनों उधर, दोनों उधर, दोनों उधर, सब कहीं जाते हैं, करंट कहीं भी जाती है, दोनों के ऊपर बराबर इफेक्ट. When they will collide, when they start moving in the water. Direction and speed. बट सर मान लीजिए कोस्टल में 2 शिप आपस में मूव कर रहे हैं, तो फिर हम कौन सी स्पीड देखेंगे सर? हम दोनों ऑब्जर्व करेंगे. एक बार स्पीड थ्रू वाटर, जब मैं अपनी मूवमेंट देखूंगा कि उस शिप के साथ मेरा क्या हो रहा है, हाउ वी आर मूविंग, देन वी गो इनटू कोलिजन अवॉइडेंस मोड. वी लुक एट आवर स्पीड थ्रू वाटर एंड द हेडिंग. इमीडिएटली व्हेन आई वांट टू सी, अच्छा वो तो हो गया, बॉय के साथ क्या, आई चेंज माय ऑब्जर्वेशंस. आई सी माय ग्राउंड स्पीड एंड माय कोर्स मेड गुड. तो दो रेफरेंस आ गए ना वहां. मुझको उससे भी देखना है, शिप से भी देखना है, दोनों ही ऑब्जर्व करेंगे. When we said coastal, we are talking about land objects. If it is floating, even in coastal, दो ship in coastal water, तो पहले हम देखेंगे ship to ship movement, speed through water, heading. Because current अगर होगी तो दोनों पे लग रही होगी. उससे मैंने सर्टेन कर हाँ सीपीए वगैरह सब ठीक ठाक है, वो निकल जाएगा दूर से. मैं देखता हूँ अच्छा बॉय के साथ क्या स्थिति है मेरी. आई चेंज माई ऑब्जर्वेशन. आई सी स्टार्ट लुकिंग एट स्पीड ओवर ग्राउंड. आई ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट द कोर्स दैट आई एम मेकिंग. आर वी गुड? Yes.
The situation can be understood by an example. We will see it on the board. We'll take 5 minutes to explain this or maybe discuss. देखो ये सब concepts है ना. I feel that this gives you a command over the situation because you understand. You know what you are doing, why you are doing. If the logic is clear, the picture is clear, then you are not in doubt. मैं ये करूं कि वो करूं, करना था वो कर दिया वो. Why? Because background is not there. So I just want to discuss it so that our understanding is clear. Let us go to the board. Take an example of the water at 10 knots. The heading is 180 degrees. There is another ship which is also doing 10 knots. The heading is 000 degrees. The distance between them right now, let us say, is 10 miles. As the steaming is happening, थोड़ी देर में इधर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इधर, इधर. Finally, there is collision. Describe the situation of collision. When the collision is taking place, what are the conditions? Are we looking at heading 18000 collision course? Are we looking at the speed STW? ये 10 knots, ये 10 knots. Time 30 minutes. 5 knot ये जाएगा आधे घंटे में, 5 knot ये आएगा. Total 10 mile cover हो गया. So heading of the ship like this, speed through water like this, time this much. Is it okay? Yes, sir. Case number 2, there is the same ship again. The two ships, the same kind of movement. This time there is a current like this. Is this going to assist this ship? So she will be moving like this, and this one is opposite. So she will move like this. Will this happen? Because this is assisting us. पीछे से जा रहा है, धक्का मार रहा है. Yes, sir. So the current is taking me like this. So I'm going here, while when it is coming, it is pushing me here. So is this okay? Correct, sir. The सही है. collision is going to take place here. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Describe the situation of collision here. Is the heading same? Yes, sir. Yes, sir. Is the speed through water same? Yes, sir. Yes, sir. The collision time same, 30 minutes? Yes, sir. Everything's in. Speed over ground, distance covered, maybe here it was 5 miles, maybe here it is 7 miles. The distance covered by this in 30 minutes, 5 miles, maybe here it is 3.8 miles. The course COG is like this. The course here is like this. This force over ground, the speed over ground, did it make any difference in the collision situation? No, the फिर भी collide होगा. Yes, sir. So But for collision avoidance, this is what was the main reason for collision. If we wanted to avoid collision, we had to look at the heading, we had to look at the STW. That will of course decide the minutes before which it is happening. One thing which is different here is the lat long. यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ. Lat long is separate. Only thing which has changed is the lat long of collision. Earlier it was happening here, because of current it is happening here. Similarly, if the current was like this, the collision would take place here.
both the ships getting pushed to this side, and it will take place here. But again, same 30 minutes. Same heading, 180000. Same STW. So if we wanted to avoid collision, are we not going to look at our heading? Because that is the reason for collision. So don't we have to change the heading? Yes, sir. Time 30 minutes. If we increase speed, it will happen sooner. If we decrease the speed, it will happen later, but still will happen. Rules of the road. सर बट Yes, sir. अगर करंट लग रहा है तो सर स्पीड उसकी बढ़ रही है तो सर वो 30 मिनट्स पे फर्क पड़ेगा ही सर। इसमें हाँ सर इसमें दैट इज द स्पीड। यहाँ पे 30 मिनट्स में ये 7 माइल गया या नहीं? गया सर, गया, ये 7 मील गया। मतलब दिस इज 14 नॉट्स SOG, इज दैट करेक्ट? ठीक है 30 सर। मिनट में 7 माइल, तो 14 माइल का स्पीड हो गया ना? हाँ सर, तो स्पीड चेंज हो गया ना, वहां पे 10 नॉट्स में था सर। ये SOG चेंज हुआ है। द इंजन दैट इज रनिंग इज स्टिल एट 10 नॉट्स। करंट इसको लेके पुश कर रहा है, 4 नॉट ऐड कर दिया करंट ने। सही है सर, ठीक है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, मतलब प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट में यू हैव रैंप्स, जैसा एस्केलेटर होता Yes, है वैसा रैंप होता है। आप रैंप पे खड़े हो जाते हो तो आप रैंप की स्पीड से चलते हो या नहीं? चलते हैं सर। और अगर आप रैंप पे चलने लगते हो तो आपकी स्पीड, रैंप की स्पीड प्लस आपकी स्पीड हो जाती है या नहीं? बिल्कुल सर। तो ये पानी रैंप है ना? हाँ जी सर। पानी पे आप 10 नॉट से चल रहे थे, 4 नॉट से स्पीड आपकी और ऐड कर दी पानी ने। हाँ सर। तो आपकी टोटल स्पीड तो हो गई 14, आप तो चल रहे हैं 10 नॉट से ही ना? हाँ सर, ठीक है। स्पीड थ्रू वाटर 10 नॉट ही रही, बट स्पीड ओवर ग्राउंड 14 हो गया। एग्जैक्टली। सो कोलिजन अभी भी 30 मिनट में ही होएगी। जो आपकी 14 नॉट कर दी उधर उसका काट भी दिया है उसी करंट ने। जो मेरी 14 नॉट कर दी दूसरे वाले का 7 नॉट कर दिया 10 से ओवर ग्राउंड। नेट यस सर, बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज हो गया। वही टाइम आधे घंटे में ही कोलिजन होनी। सो अगर कोलिजन अवॉइड करना था तो वी हैड टू चेंज द हेडिंग, क्योंकि कोर्स इधर को गया इधर को गया कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोलिजन तो हो गई। कोर्स ओवर ग्राउंड से कुछ नहीं हुआ, वो इधर को गई उधर को गई, लैट लॉन्ग बदली हो गया लेकिन कोलिजन हो गई। अगर कोलिजन बचाना था तो हेडिंग चेंज करनी। सो फॉर कोलिजन अवॉइडेंस व्हाट वी शुड मॉनिटर? हेडिंग एंड स्पीड थ्रू। तो स्पीड Heading and speed forward. Now in the same situation, in the same situation, suppose that you have been moving in this direction like this. Your COG here is now something like 030 degrees, although heading is 000. आपका हेडिंग 00 है लेकिन आपको करंट पुश करके लेके जा रहा है। So course made good. The ship is actually moving like this. The speed STW was 10 knots, but because you are being pushed by the current, so it is now 14 knots. So you have force over ground 030 SOG 14 knots. You were watching this ship when we are going to collide. For that you were looking at your STW, sorry, heading and STW. But supposing there is a buoy at this place. What are you going to observe? STW से आप इधर को जा रहे थे, हेडिंग से इधर को जा रहे थे, आपकी मूवमेंट ये थी।
000 degrees. Are you going to watch 000 or you are going to watch your 030 because you are going to collide? You are getting pushed by the current. This is not getting pushed by the current. It is still remaining. Current आपको push कर रहा है. अगर नहीं पुश करता तो आप सीधा निकलते. पुश कर रहा है तो इधर को जा रहे हैं. कम पुश करेगा तो यहाँ निकलेंगे और पुश करेगा तो इधर को निकलेंगे. अगर टोटली कर दिया तो इधर को निकलेंगे. So are you going to look at this course over ground or heading for collision with this boy? The course over ground. कितने देर में यहाँ पे इससे आप टकराएंगे? Will that depend on your 10 knots or your 14 knots? 14 knots. 14 knots. Are we clear? 14 what we are 14 talking about? Yes, sir. Correct, sir. मतलब कोई stationary object will observe through speed over ground. If it's a ship, then we'll go for speed through water. Exactly. क्योंकि Speed through water करंट and से heading. मैं और मेरी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट तो मूव करती है, ग्राउंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, वो वहीं रहता है. करंट से मैं तो मूव करता हूँ, करंट मुझको पुश कर देती है लेकिन उसको नहीं करती. तो मुझको देखना है कि करंट मुझको साथ लिए जा रही है. मैं तो चल ही रहा था, करंट भी लेके जा रही है. So what is my speed with respect to that fixed object, ground? Are we good? Yes, sir. And that's why, sir, we use speed over ground during berthing and unberthing. Exactly. बर्थ यहाँ पे है, आपकी जहाज आ रही है, आपका इंजन हो सकता है, बहुत करंट होगा तो आप खूब इंजन चला रहे होंगे, करंट पुश कर रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं क्या जेटी पे कैसे आ रहा है. जेटी तो फिक्स्ड है. तो यू हैव टू लुक एट द स्पीड ओवर ग्राउंड. एज अ जूनियर ऑफिसर you must have observed the captain asks you what is the speed. Now you are confused. मैं बताऊं क्या, STW बताऊं कि SOG बताऊं? रडार में दोनों दिखाता Always, है. yes, sir. सर बहुत बार हुआ है सर, ये हमेशा होता है. बहुत बार हुआ, मेरे साथ भी हुआ है. I was not watchkeeper, but I was a radio officer assisting in navigation also. I was also confused at one point of time when I didn't know about this concept. हाथ फूल जाते हैं कि अरे क्या पूछ रहे हैं सर, तो दोनों जाके बता देता हूं. So when we are at the jetty berthing, the captain is asking for the speed of the ship. The ship is going towards ship direction sideways. What is asking? Speed Course over or ground. Speed over ground. Course or ground and course or ground. Exactly. So that is what the concept is. So we have speed over ground and we have course over ground. We have speed through water. We have heading of the ship. We require two different devices which can give us, or any one device which can give us both. When I want SOG, it gives me SOG. When I want STW, it gives me STW, because there are conditions when I want this or I want this. I cannot live with only one speed. I have to have both. There are conditions where I need this in different conditions. So predominantly the speed logs that we have on board. Sir, one more thing आपने मिटा दिया. Okay. बोलो. सर ये जो एक और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये दो केस आपने बताए थे. सो लाइक ओके, इफ वी व्हाई वी टेक दैट स्पीड थ्रू वाटर एंड ऑल, द सेकंड थिंग इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, आप पहले केस में देखोगे, सो इफ वी टेक फॉर द कोलिजन अवॉइडेंस, इट इज एन हेड ऑन सिचुएशन, बोथ विल ऑल्टर टू स्टारबोर्ड. नाउ द सेकंड केस, like if we take this course over ground and speed over ground, second case, if you see their aspect, it is becoming a crossing situation. No. Aspect is heading. Aspect is 000 for both of you here, 000 for both of you. You are right ahead all the time. When you are here, you are right ahead. When you are here, you are right ahead. Aspect is same in this condition and this condition, both.
Okay, Aspect okay. sir, we see from speed through water and heading na, correct sir? Exactly. That हाँ, is what I हाँ, said. right, right. हाँ 0 0 रहेगा. Here, your aspect is 0 0 0 because right ahead. Correct? That is the reason why there is collision. Is that correct? Correct sir. When you are moving here and there is a current, when you are moving like this, when you are moving like this, the current is there pushing you like this. What is the aspect? Is it not the same? You're Yes, sir, still same. head on, right? Aspect is same. Yes, sir, Aspect is aspect same, remains and same. that is why the collision. That is why the collision. SOG different, COG different. ये अलग अलग हो गया. This is different, but STW same, heading same, and so aspect also same. So current did not do anything to your heading and STW or rather aspect. Current was there or not there, aspect remains same. जो situation यहाँ थी head on की, वही situation यहाँ पे भी है. Are we good? Okay, sir. Okay. Yes sir. Concept clear? Clear sir. Thank you. Okay. So we have SDME, speed and distance measuring equipment. We have Doppler log, one of the SDME is Doppler log. Other one is EM log. Third one is pressure log. This is predominantly used for SOG, speed over ground, but can also give you STW in given condition. It is conditional. It can provide you speed through water, but in a given condition. EM log is only for STW. Pressure log also only for STW. This we are not going to talk about because it is now obsolete, nobody uses. But there is no replacement of this EM log as of now. So these two are going to get discussed in the class. The first, I hope we have done it, but we'll repeat it in the next class. EM log is what we are going to talk about. Hmm. 1 second, please. Just 1 second. 1 second. All right. So EM log. The word EM stands for electromagnetic. EM log, when we are saying, it's a speed log which depends or works on the principle of electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? We have to go back in our academics classes little bit, which we have already studied. We may have forgotten. We may remember some back again when we start discussing. In general, electricity and magnetism are interlinked. Electricity is basically flow of charged particles. What are charged? Yes, sir.
What are charged particles? Electrons, protons, these are charged particles. What we have our convention that electrons are negatively charged, protons are positively charged, but those protons are normally held tightly in the nucleus. It is the electrons which keeps on jumping from one atom to the other and creates electricity. So wherever there are charges in motion, there will be magnetism. Or when we have magnetism, we can create electricity. With the current is basically flow of charge, flow of electrons through a conductor like copper, aluminum, all kind of metals. So if there is a current in a conductor, that moving charge will create a magnetic field around it. Conversely, when we have already got a magnet, for example, permanent magnet, that magnetism has got potential to create current, but in a given condition. Inside generator, they use this one. Exactly. Electromagnetic induction. Yeah, they use this magnetic field to generate electricity. Exactly. 100%. So, the second part is what we are going to talk about. We are going to create electricity with magnetism. But we also said that it is conditional. What are the conditions? So we are going to now create electricity with magnetism. Conditions. Statement. Okay, this principle was first propounded or discovered by Michael Faraday, the very popular scientist, physicist basically. So the principle is known after him only, called Faraday's principle of, or Faraday's law of electromagnetic induction. What does it say? It says whenever a conductor is moved, a conductor, it is a copper coil. Basically length is so much, but it is turned into a coil. So whenever a conductor is moved in a magnetic field, magnet, north and south, so there are magnetic lines of forces which are imaginary lines. They are represented. This area where magnet has got an influence. अगर कील रखेंगे तो यहाँ खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तो नहीं खींच पाएगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई. जैसे जैसे नजदीक जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती है मैग्नेटिक फील्ड. तो ये ज्यादा और कम को कैसे हम बताएंगे? That is by represented by imaginary lines of forces. So a magnet has got imaginary lines of forces which extends away in the space surrounding the magnet. So there are more number of magnetic lines of forces here, more denser, and here it is little less. जैसे जैसे दूर जाएंगे और हल्का होता जाएगा, magnetic effect will no longer be observed at a distance away. So there is a magnetic field in which magnetism can be experienced by a magnetic material or another magnet. So whenever a conductor is moved in a magnetic field in such a way that it cuts the lines of forces, it is cutting the lines of force. It is cutting the lines of force. The motion is such that it is cutting the lines of force, not like this when it is not cutting the lines of force. So motion should be at what angle to the lines of forces? Perpendicular. Perpendicular. Of course, when it is going like this, is it cutting or not? Cutting. Yes, sir. Still cutting, but not 90 degree. तो जरूर कुछ साइन थीटा का लगता है पंगा यहाँ पे. 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे मैक्सिमम. जी सर. इसी से Yes, आता sir, है right. साइन वेव, जो हम लोग बहुत जगह सुनते हैं ना, साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव और साइन वेव.
इसी से आता है. At 0 degree 0, at 90 degree maximum, so the current will be as a function of sin theta or sin cutting angle. इसीलिए sin wave. Anyway, उधर नहीं जाते. So whenever the conductor is cutting the magnetic lines of forces, an EMF is induced in the conductor. There are two ends. Can you see the two ends? Is it visible? Yes, sir. So between the two ends, there is positive and negative terminal created. It becomes like a battery. And That then means there is potential here. एक positive हो गया, एक negative हो गया. potential difference create हो गया, current flow करे. Exactly. उसी को EMF बोलते हैं, electromotive force, the force that moves the electrons. So this, Yes. these two ends are now positive and negative, but this happens only during the time when it is cutting. If it is not cutting stationary, there is no motion, there is no EMF. Only it happens when it is in motion. During that time, the EMF is created. So now if these two ends are positive and negative, and if I connect, let us say a bulb like this, और दूसरे एक दूसरे को जोड़ दिया, तो ये बल्ब जलेगी या नहीं? अगर पॉजिटिव नेगेटिव है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जल जाएगी. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस will create a current through this. It will create a current through this. Current will pass through the bulb and the bulb will glow. This is what is electromagnetic induction. One liner once again. Electromagnetic induction is, or Michael Faraday's law of electromagnetic induction is that whenever a conductor is moved across a magnetic field so as to cut the lines of forces, an EMF is induced in the conductor. इस कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है. If the circuit is closed, if the circuit is closed, that means one end and other ends are joined together, then this EMF will in turn create a current, or what we call the induced current. There will be induced current in this if the circuit is closed. Now suppose if we have this magnetic field, if we have this conductor and we are keeping it stationary like this, is there any EMF being generated here? No, sir. No. Only when there is a relative motion between them. How much of EMF will be created? कितना voltage create हो जाएगा? Three factors. Strength of the magnetic field. कितना strong magnetism है? अगर नहीं होगी magnetism zero, तो zero EMF. That means more EMF, more magnetism, more EMF. So first factor is the strength of the magnetic field. Second one is the length of the conductor. The length of the conductor, what we are saying, all the length has to be within the magnetic field. तो ऐसा नहीं कि लंबी तार ले ली और इतना सा तार यहाँ, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं. So normally what is done, it is turned into a coil and the coil is placed inside the magnetic field. And when it is moving here, EMF will be created. More number of turns, more length of the coil basically, more the EMF. Second factor. The third factor is the relative motion. At what speed it is moving. If not moving, no EMF. Slowly moving, small EMF. Fast moving, more EMF. सर एंगल का नहीं फर्क पड़ेगा? Of course पड़ेगा, वो तो हमने पहले ही बोल दिया. So as to cutting lines of forces. वो तो ठीक है, जब बोला मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा और 0 पे कुछ नहीं होगा, बट इसमें जब आप बोल रहे थे तो इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हम अभी. हम कंसीडर कर रहे हैं. मान लीजिए कि इस एंगल पे करते हैं. हाँ. हमारा मोशन इसी एंगल पे है, मान लीजिए. तो अगर हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो कुछ नहीं, नो EMF. हाँ ठीक है सर. अभी धीरे धीरे पास किया इसी एंगल पे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा सर.
अभी तेजी से पास किया तो और ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। मान लीजिए एक्स की डिस्टेंस से हम एक्स की स्पीड से हमने पास किया, यहाँ पे इस एंगल पे एक्स की स्पीड है। अब वही एक्स की स्पीड होगी अगर 90 डिग्री पे, तो ईएमएफ का क्या होना चाहिए? ज्यादा होगा। sin 90 मैक्सिमम is equal to 1 मैक्सिमम होएगा। मैक्सिमम 45 डिग्री पे 1/√2 होएगा। करेक्ट है, सही है। 0 डिग्री पे 0 होएगा। तुम कितना भी तेजी से ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होएगा। sin 0 is equal to 0। सही है सर। ठीक है, all right, so 3 factors: strength of the magnetic field, length of the conductor, and the velocity of the conductor or relative velocity of the conductor and the magnetic field। या तो आप इसको इसमें मूव करें या इसको इसमें मूव करें, relative velocity होना चाहिए। In most cases you would know that जब हम डिवाइस बनाते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। जितने जो भी करना है वो फिक्स्ड हो गया मैग्नेटिज्म। किसी चीज को डिजाइन किया, डिवाइस किया, तो उसका लेंथ भी फिक्स्ड हो जाएगा। सो 2 things are fixed out of the 3, 2 parameters are fixed. Magnetic strength is fixed, length of the conductor fixed। तो वेरिएबल कौन सा बच गया? movement Movement। The motion is the variable thing। relative। Zero motion, zero current; slow motion, slow current; fast motion, high current। So if these two are fixed, we can always say almost that the EMF generated is equal to rate of change of magnetic lines of forces। Now what is this? Magnetic lines of forces। यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी, यहाँ पे कम। जब मैं कम से इसको ज्यादा में लेके आ रहा हूं तो कितने टाइम में आ रहा हूं? अगर धीरे धीरे आया तो ज्यादा टाइम लेगा, रेट कम। अगर जल्दी से लाया तो कम टाइम लेगा, रेट ज्यादा। So how much of EMF and in turn induced current? सर ये पहले वाला एक बार रिपीट करेंगे जरा, स्क्रीन वो हो गई थी, फ्रीज हो गई थी। कैसे फिर से बोलो। सर पहले वाला थोड़ा रिपीट कर देंगे, वो स्क्रीन थोड़ी भी फ्रीज हो गई थी। पहले वाला कहाँ तक आपने सुना था मुझको? सर वो 3 फैक्टर्स सुन लिए तो समझ गया था, उसके बाद जो आपने बताया था। Okay, so 3 factors are the deciding factors which are deciding how much of EMF will be induced. The next part that we are talking about, that in general when we are designing a device, जब हम एक चीज कुछ बना रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया, that will remain fixed। The length of the conductor also will remain fixed। Yes sir। Normally अब वेरिएबल कैरेक्टर क्या रह गया? वेरिएबल फैक्टर क्या रहेगा? कैरेक्टर नहीं, सॉरी, व्हाट इज द वेरिएबल फैक्टर रिमेनिंग नाउ? सर रिलेटिव स्पीड। Relative speed, exactly। So if no motion, no EMF। थोड़ा थोड़ा मोशन, थोड़ा थोड़ा करंट; ज्यादा मोशन, हायर मोशन, ज्यादा और ज्यादा करंट। So only variable factor is the motion। So this being said, let us also understand one more thing about the direction of the current। There are 2 ends, as you can see। When we are connecting, when we are completing the circuit like this, एक positive, एक negative, so current is going to flow in this direction or in this direction? Current, that means electrons are going to flow, इस एंड से इधर को जाएगा, इस एंड से इधर को जाएगा। That is decided by another rule called Fleming's right hand rule। Remember everybody? Yes sir, 11। Yes sir, yeah, Fleming's section right hand- In that Fleming's right hand rule, this is the direction of the magnetic current, magnetic field। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ है यहाँ पे, तो नॉर्थ से निकलता है लाइंस ऑफ फोर्सेस और साउथ को जाता है। तो ये डायरेक्शन अभी लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ये। सो वी विल टेक दिस मिडिल फिंगर एज द डायरेक्शन ऑफ द
magnetic field. The thumb will represent the motion of the conductor. So the conductor is going to pass like this. So the thumb will be this. So magnetic field like this, motion like this, then the current will be flowing in this direction towards you. So if I have a conductor which is passing like this, magnetic field like this, motion like this, then the current is flowing from this end to this end. If the magnetic field is same, but the motion is changed, then if it is going like this, if it is going like this, the motion is here, magnetic field here, so the current will be from screen to outside. If we change the magnetic field like this, motion like this, then again back there. So Fleming's right hand rule is that we stretch the three fingers, thumb, middle finger, and the index finger, mutually perpendicular to each other. The middle finger indicates the magnetic field, the thumb indicates the motion of the conductor, then this will indicate the direction of induced current through the conductor. Yes, sir. So, the theory being done, the principle understood, we had started off talking about STW and SOG. Before we close, we will just get back to that one point once again. Did we all agree that speed through water is the speed of the water passing by the hull? Yes, sir. Everybody agree. Is the water a conductor of electricity? उधर तार डालिए और पानी में इधर को छुइए, करंट लगेगा? Yes, sir. Salt water. Salt water, normal water also less conductivity, salt water more conductivity. So there is water which is a conductor of the electricity. That means it's a conductor, and it is also in motion depending on what kind of propeller the ship is turning. ज्यादा टर्न कर रही है तो पानी ज्यादा पीछे जाएगा, कम कर रही है तो कम जाएगा, अगर नहीं कर रही है तो स्टेशनरी हो जाएगा. So is there a conductor which is changing its motion depending on the engine operation of the ship? Yes, sir. The conductor is water. Correct, sir. So a conductor in motion, do we have right kind of ingredient available for electromagnetic induction? कुछ करेंगे तो हम इस कंडक्टर के मोशन को मेजर कर सकते हैं या नहीं? Principle that we talk. कर सकते हैं सर. पानी है, पानी बह रहा है, हम उस पानी बहते पानी को एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें उसको और पानी को भीतर से पास कर दें तो मूविंग कंडक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड में या नहीं? करेक्ट सर. तो कहीं ना कहीं करंट तो जाएगी, हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम करंट तो निकलेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मोशन ऑफ the water will be like this, so there will be current being induced from this side to this side or this side to this side depending on the water flow. Yes, correct sir. Yes. And this is how the EM log works. We have generally done it. We will take a look at this in more detail tomorrow in the next class, but this is what is done. We place a magnet under keel, we pass the water through a tube and we pick up the current. अगर current zero है तो water is flowing at what speed? Current zero, then speed? Zero. Zero. Current थोड़ी speed? थोड़ी. Yes. थोड़ा सा. Current ज़्यादा, speed? तेज हो जाएगा. So that is what we do. We do the calibration. एक बार लैब में कर लेते हैं कि इतने स्पीड पे इतना करंट, इतने स्पीड पे इतना करंट. अब हम उलट लेते हैं इसी ऑब्जर्वेशन को, इतना करंट, इतना स्पीड, इतना करंट, इतना स्पीड, डिस्प्ले कर देते हैं. That's what EM log is all about. Just that.
अगले क्लास में। Any questions? No, sir. EM log. We did discuss about the difference between speed over ground and speed through water, and we saw the application of the two. We gave special attendance to that particular discussion because a question aati hai कि differentiate between speed over ground and speed through water and their usage. So a clear cut understanding has to be there. इसके लिए स्पेशल डिस्कशन हुई। मेरे ख्याल से द बैच हु इज पासिंग जस्ट नाउ, उनको डॉपलर लॉग जब पढ़ाया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था ये, बट सिंस वी आर टॉकिंग टू द न्यू बैच आल्सो, वी टुक स्पेशल टाइम टू डिस्कस दैट पॉइंट। सो basic principle we have understood. It is the basic principle is electromagnetic induction, which says that whenever you move a conductor through a magnetic field such that it is cutting the lines of forces, then an EMF, electromotive force, will be induced in the conductor. It is the same principle on which all these generators are working. मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें हम एक कॉइल को घुमाते हैं, विच इज आपने देखा होगा मोटर की दुकानों पे वो कॉइल बना होता है, जैसा ये वाली तार होती है, कोई मोटी कोई पतली, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द जनरेटर। तो उसको कॉइल बनाते हैं और कॉइल को घुमा देते हैं मैग्नेट के बीच में। बहुत बार ऐसा होता है कि ये मैग्नेट जो है वो परमानेंट हो सकता है, बहुत बार ये परमानेंट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, तो मैग्नेट कहाँ से आएगा, तो इसमें भी एक हम कॉइल डाल देते हैं, लोहे का जो पीस है उसके अराउंड भी कॉइल बना देते हैं और इसमें करंट दे देते हैं, तो उस करंट से मैग्नेटिज्म भी बनता है, तो इसको हम फील्ड कॉइल बोलते हैं। जो हमने मैग्नेट को बनाने के लिए जो बनाया वो फील्ड कॉइल है, और जो घूम रही है वो आर्मेचर है। पंखे में लगा रहता है सर। एग्जैक्टली। सो हमने करंट से मैग्नेट बनाया, मैग्नेट से करंट बनाया। सो उसके अपने प्रोसेसेस हैं, वो जनरेटर कैसे बनता है वो अलग थ्योरी है, क्या क्या कंसिडरेशंस हैं वगैरह वो सब अलग है, बट हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड यूजिंग मैग्नेटिज्म। इनफैक्ट हमारे ईएम लॉग में भी मैग्नेटिज्म करंट से ही बनता है। जो मैग्नेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी करंट से ही बनता है, और उस करंट से जो मैग्नेट बनता है उसके बीच में कंडक्टर फ्लो कर रहा है, which is the water. So now we will take a look at the construction of the EM log on the ship. We'll go through the slides, the PPT, उसमें कुछ एक दो slides जो है वो कल के रिवीजन का होएगा। We'll get your understanding clear, seeing some diagrams, asking you some questions that whether we understand this process or not, and then we go on to the diagram that explains the working of the EM log on the ship. सेम फंडा सर उसमें भी यूज होता है Yes, रडार Akash, में। go ahead. सेम फंडा रडार में भी यूज होता है सर, ईएम वाला। हम अगेन थोड़ा जोर से बोलिए ना, माइक्रोफोन नजदीक कर लीजिए। सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रडार आल्सो ना? Negative. Radar में it is not used. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Radar में this is used. This principle is used, but only for receiving the signal. How come? तो एक रिसीविंग एंटेना आपका VHF एंटेना लगा हुआ है मंकी आइलैंड पे, मास्ट पे, VHF एंटेना या MFHF एंटेना. So there is a rod in the name of antenna. Is that correct? ऊपर में एक रॉड लगी है ना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है जो किसी ने ट्रांसमिट, सौरभ कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन? यस, थैंक यू।
When somebody is transmitting, there is electromagnetic wave. That means a wave which is having electrical field and magnetic field together, which is fluctuating at the frequency transmitted. वो मान लीजिए चैनल 60 पे ट्रांसमिट कर रहा है 156.8 मेगाहर्ट्ज, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर से जो फ्लक्चुएट हो रही है एट 156.8 मेगाहर्ट्ज. व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग हियर, ये एक कंडक्टर है या नहीं, जो एंटेना लगी हुई है, सिंपल कंडक्टर है. अब इसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रहा है. तो इज देयर अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंटेना कंडक्टर? यस सर. तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, एंटेना में करंट इंड्यूस हो जाता है. यही करंट जाती है नीचे VHF डब्बे में आपके, उसको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट में डालते हैं स्पीकर में, तो आवाज सुनाई पड़ती है. राइट. व्हेन ट्रांसमिटिंग आप करंट देते हैं, बोलते हैं, आपका ऑडियो सिग्नल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू करंट. उस करंट को प्रोसेस करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं और एंटेना में डाल देते हैं. तो यहाँ एंटेना में करंट फ्लो कर रहा है. इस फ्लक्चुएटिंग करंट से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करती है जो ट्रांसमिट हो रही है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज हैपनिंग बोथ द साइड्स, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट. सो रेडियो कम्युनिकेशन में भी ये बहुत अच्छे से धड़ल्ले से यूज हो रहा है. बट रेडार पर से अगर बोलें तो रेडार में नहीं. वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक कैविटी में जनरेट की जाती है. स्पेशल कंस्ट्रक्शन कैविटी ऑसिलेटर बोलते हैं उसको, व्हाट वी कॉल द मैग्नेट्रॉन. तो मैग्नेट्रॉन में हम पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देते हैं और उसको वेवगाइड के थ्रू ऊपर ले जाते हैं और रिलीज कर देते हैं. तो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसमिटेड. राइट सर. Yes, understood? यस सर, अंडरस्टूड. Yes. पर रिपीट करते हैं. मैं अभी जस्ट वो पाया, मेरा डिस्कनेक्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वो हैंग हो गया था, फ्रीज हो गया था, वापस से रिकनेक्ट किया. Okay, so where did you hear last? We were talking about whether the radar is using electromagnetic induction or not. कहाँ पे नॉक ऑफ हुए थे आप? कनेक्टिव सर, अभी मैं वो तब से लगा हुआ था उसको कनेक्ट करने के लिए, कोई नहीं रहा था वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. वो where you heard till last? सर मैं तो अभी भी कनेक्ट हो पाया, मतलब मेरा बीच में हैंग हो गया था, फ्रीज हो गया लैपटॉप ही, उस चक्कर में सब कुछ का उसको रीस्टार्ट किया पूरा. Okay, so अभी तक जो हमने बात किया वो बात नहीं हुई. कुछ नहीं सर, वो कुछ नहीं कैच अप कर पाया, वो फ्रीज हो गया था लैपटॉप मेरा. Okay, so what we are actually discussing, जो हमने कल किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. Sorry guys, for the benefit of Anmol, just bear with us. थोड़ा सा अपडेट दे दो कि हम क्या बात कर रहे थे, नॉट इन डिटेल बट यस आइडिया हो जाना चाहिए. सो कल जो हमने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को रिवाइज कर रहे थे हम कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दोनों इंटरलिंक है. कल के मेरे पहले स्टेटमेंट में यही था कि बोथ आर इंटरलिंक टुगेदर. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इनसेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. Wherever there is electricity, there will be magnetism. Wherever there is magnetism, there can be electricity. Can be, given condition, can be. So, बीच में एक क्वेश्चन आ गया कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रडार भी काम करता है ना, एकांश ने पूछा. तो we were trying to clarify his doubt कि predominantly इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं यूज होता रडार में, लेकिन नॉर्मल रेडियो कम्युनिकेशन में होता है. जब हम एंटेना से ट्रांसमिट करते हैं, एंटेना से रिसीव करते हैं, तो इट इज द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग. व्हेन ट्रांसमिटिंग, व्हाट वी स्पीक गोज लाइक अ करंट इन द एंटेना. इफ द एंटेना इज देयर, इसमें एक ऑसिलेटिंग करंट होता है जो हम प्रोड्यूस करके इस डब्बे VHF के डब्बे से बात करते हैं.
This fluctuating current in turn produces a fluctuating magnetic field which travels at the speed of light. When the signal is coming at the receiving antenna, so there is a magnetic field which is fluctuating like this, and a conductor is placed. So do we say the flux associated, magnetic flux associated with the antenna is changing? Yes, Anmol? Yes, sir. Right. So if the flux associated with the antenna is changing, will it induce a current in this? Yes, sir. That same current is taken, processed, and put back into the speaker where you hear the sound. जो किसी ने ट्रांसमिट किया, फिलिपिनो मंकी या 1 2 3 4 कोई है, which you are hearing is all because of electromagnetic induction. Banana stew. क्या बोले? Banana port control. Yes, banana port control. तो पता नहीं कहाँ से ये सब आया है, but it's funny. सर एक बार तो झगड़ा हो गया था, मैंने सुना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरानियन नेवी और यूएस नेवी में इसी को लेके। एकदम होना चाहिए, हुआ तो अच्छा भी हुआ. It should not be. I have seen, और मैं क्लास में जनरली बात भी करता हूँ, एक GMDSS के क्लास में खास करके, we have to be officers, responsible officers. There was a case when somebody was trying to get in touch with the port. He was little far off, not exactly in the vicinity, थोड़ा दूर में था. We were in the middle somewhere. यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे वो जहाज है, हम बीच में हैं, तो हम दोनों को सुन पा रहे थे. Those people required medical assistance. They are trying to call the port for assistance, and in between there is this menace going on. फिलिपिनो मंकी, गाना, ये वो, चैनल 16 पे और पोर्ट चैनल्स पे भी बीच बीच में. He is trying to call somebody, and because of this nuisance, they were not able to connect to the port. मैंने भी रोकने की कोशिश की इन लोगों को कि अरे शांत हो जाओ, कुछ कर रहे हैं, गाली सुनी. तेरे को क्या, कुछ इस तरीके का आंसर मिला मुझको, not realizing what he is doing. Very pathetic. We should not engage in this kind of things. We are responsible officers. We have, so much of responsibility as an individual. सर ये VHF में कोई ट्रेसिंग टूल नहीं लग सकता कि जहाँ से ये सब गन मचा रहे हैं लोग ट्रेस हो जाए? मान लो ट्रेसिंग टूल लग भी गया, वैसे लगना थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, तो ट्रेसिंग तो इधर से ही आ रही है. सिग्नल तो इधर से आ रहा है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, सब तो इसी तरफ को जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पता चल जाएगा अब कौन है. इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन में इट इज अ रूल. आई know that you all have GOC with you. You are under oath to follow rules and regulation. आपके सर्टिफिकेट में, अभी नए वाले में पता नहीं है या नहीं, बट पुराने वाले में क्लियर कट लिखा होता था, सर्टिफिकेट में लिखा होता था, you are under oath for secrecy of correspondence. आप इधर उधर की बातें नहीं करो, and you will follow rules of communication. One of the rule is never transmit without identification. Ship so and so, this is ship so and so, this is साथ में फोन में तो इंडिया पाकिस्तान चलता रहता पूरा टाइम. सर पूरा टाइम इंडिया पाकिस्तान चलता है, जब चैनल 16 पे यही चलता है वहां पे. क्या करोगे? These are uncouth kind of people who don't know what they are doing. They don't have any sense of responsibility. They don't have sense of pride. Yes, I am an officer. I wear, straps on my shoulders. उसका कोई pride नहीं है उनको. Or maybe it is third class, some people. But anyway, third class क्या बोले हम उनको? They are misinformed or ill-informed people, or not having. One of the places, I think it was Italy or France, I don't remember exactly, but they had this identification. So if any ship is transmitting
they can instantly know from where it is on channel 16 or whatever channel it is. I mean, radio, they can pinpoint and identify. So एक बार ऐसे ही उन्होंने कोई nuisance create कर रहा था. They called the ship and told, and the ship is saying, no, I'm not the one. Said, please don't lie. I can see you clearly. I have the equipment. I can trace out that it's you. And if you do it next time, there will be penalties on your ship. Okay, so अकल ठिकाने आ गई. I don't know how they did it. I really have no idea as to what kind of technology they have used for this, pinpointing a transmission. होगा, अभी कुछ होएगा, उसके बारे में अभी हम लोग ड्वेल नहीं करते हैं, बट मे बी पॉसिबल. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो देयर कैन बी वो जो सबमरीन यूज करते हैं इको लोकेशन वाला, दे आर एम्प्लीफाइंग दैट ओनली. हो सकता है इको लोकेशन भी हो, कुछ उस तरीके का हो, लेकिन इको लोकेशन से तो हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं ना. हम ये पता कर सकते हैं एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ. इको लोकेशन तो हो गई, लेकिन उसने ट्रांसमिट किया कि नहीं VHF पे, वो मैं कैसे पता करूं? तो आई डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ. हाउ तो सिंगापुर स्टेट्स में भी दे कैन आइडेंटिफाई नाउ, वो पिन पॉइंट कर देते हैं कि शिप ने ट्रांसमिट किया है VHF पे. अच्छा, AIS वाला तो ठीक है, AIS का तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन VHF पे दे कैन कॉल ऑन VHF, आइडेंटिफाई कि भाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस, सो यू स्टॉप यूजिंग योर VHF. नहीं, अगर इटली या फ्रांस में हुआ है तो सिंगापुर में होगा. देयर इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ राइट नाउ कि हाउ दे हैव डन इट. मे बी थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे, थोड़ा पता करेंगे, रिसर्च करेंगे कि क्या हुआ. सो नॉनदलेस रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया. So we are now going to talk about the construction of EM log in the ship. We'll go through the slides, so allow me to go to the slides. I'm muting my video for now. Just 1 second. Let me open the file. All right, I suppose the screen is visible to you all. Yes, sir. Yes, sir. All right, so we have done this principle. अब हम करेंगे ship setup of EM log, जैसे जहाज में कैसे होता है. Then we talk also about the limitations, and there is one factor that we'll talk about later, how to take the speed display to different locations. So just read through quickly. So that we are officially done with the topic. But हमने discuss कर लिया at length, in detail we have discussed this. Next, so a ship which is anchored can also have speed through water, because the speed of the ship through water is the speed of the water passing by the hull. Next, the principle on which EM log is working, Faraday's law. I think we had seen this second part. What is the meaning of closed circuit और कैसे होएगा?
Yes, sir. If we close the circuit, then electric current will flow. यस, बैटरी होती है तो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट तो है, लेकिन कुछ करंट फ्लो नहीं करता। जब हम दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं एक लोड के साथ, वो बल्ब हो या हीटर हो या फैन हो, कुछ हो, तो वो करंट फ्लो करता है एंड द लोड इज बिगिनिंग टू एक्ट। So the three factors on which the EMF will depend. Sorry. First one is the strength of the magnetic field, length of the conductor, which cuts the lines of force. ऐसा नहीं कि बाहर निकला हुआ है तो उसका काउंट नहीं होगा, only that much of length which is inside the magnetic flux. And third one is the velocity v, which is basically rate of change of magnetic flux. In most cases, you would understand that the strength of the magnetic field will be fixed. ये fixed होएगा. Length will be fixed. So only variable is the velocity. और इसी का एडवांटेज हम उठाते हैं EM log में। So if two factors are constant, the magnetic field and the conductor length, then it becomes EMF is directly proportional to rate of change of flux. Of course, there will be a factor of K. That K will depend on the length and magnetic field का constant जो है उससे define होगा। Delta phi by delta T is basically rate of change of flux passing through the conductor. Yes, sir. Rate of change of flux. Yes. So here is a diagram which explains this theory. If you are moving the magnet, through the coil, the solenoid, the current can flow either in this direction or in this direction, depending on which side to which side it is moving, the motion. The blue motion, that is right of the screen to the left of the screen, the current is flowing through the galvanometer. This is galvanometer which reads the current. How much of current and also the direction. So the induced current, because it is a short circuit, remember, the coil is connected through the meter. So there will be a current induced because one end will become positive, other end will become negative. Current is flowing in this condition from positive to terminal to negative terminal. So which is this case? ये blue वाला motion है या red वाला motion है इस केस में? The magnet is being pushed from left to right or from right to left. It is this case. यहाँ arrow भी बना हुआ है red color का. So the current direction changes as per the motion. Why we are talking about this? Because the ship can go forward. When the ship is going forward, water goes backwards. What about stern movement? When the ship is going stern, the water will move in opposite direction. And that direction of the current will show whether the water speed is forward speed or astern. So the speed can be displayed as forward speed with positive sign or no sign. If the ship is going backward, at what speed, that will be shown by a minus sign. That means motion in reverse direction.
EMF, and so the current is also a factor of the angle at which the conductor is cutting the lines of forces. We talked about this, the sine function. If it is along the length of the, or along the magnetic lines of forces, angle 0, induced EMF 0. If it is at 90 degree, then EMF is maximum. Fleming's right hand rule for finding out the direction of the current. I think it is self-explanatory now. कल के discussion के बाद. Yes, sir. So next, ये हो ही गया, इसी का description है. Now, how is this principle applied in case of the ship? How do we design an EM log for finding out the ship speed? We'll go directly to a diagram which will explain the system quite well. So here we have a setup. This one, the gray, is a tube, non-metallic, non-conducting kind of tube. Hollow tube through which the salt water can pass. It is installed along the length of the ship. Fore and aft line पे aligned होता है. So when the ship is going, ship is going forward, the water will go through this in opposite direction backwards. So this gray tube is called a flow sensor, sometimes also called rod meter. Flow sensor because it is sensing the flow of the water. So simple logical name. Around this, in the vertical alignment or vertical orientation, are the two poles created using electromagnet. If we had used the permanent magnet here, over the period of time, of course, the magnetism will change. धीरे धीरे करके उसका strength कम होएगा, और वो कम होएगा तो system constants change हो जाएंगे. Remember that EMF induced is directly proportional, or not proportional, but also depends on the magnetic field strength. अगर वो change होगी तो EMF change होगा, which we don't want. We want constant magnetic field. And so for that, we are using electromagnet. How we are making the electromagnet? We are having a coil wound like this over the system, and इसके through एक current दे देते हैं. So a magnetic material around which there is a coil, a current is passed through this, then these becomes electromagnet. So now the magnetic lines of forces are running vertical from one pole to the other pole, and through that there is water passing by, which is the conductor. Sorry. So now here is a magnetic field through which a conductor is passing. Conductor is moving.
of course in the water there will be a current produced. EMF will be there. Yes, sir. अगर बाहर की चीजें connected हैं, if the two ends of the water are short circuited by a circuit, then there will be a current. Now seeing Yes. this, seeing the diagram, use the right hand rule to find out the direction of the current. Remember that the water is flowing fore and aft right now from forward towards aft. बाव से stern की तरफ पानी बह रहा है. So your index finger should be showing the direction of the flow of water. The thumb should be showing the flow of the water. The magnetic field will be represented by your index finger. The middle finger will show the direction of induced current from which side to which side. So in this condition, the direction of magnetic field is this, from bottom to top, because it goes from north to south outside. Within the magnet, south to north, but outside from north to south. Just to indicate what we are talking about, अगर ये north south है, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और भीतर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है. So we will take this direction as the direction of the field. अभी जो हमारे पास डायग्राम थी उसमें north was here and south was here. So the direction of the current will be this. Take a look here. So please tell me the direction of the current. Mutually perpendicular to each other. Yes, sir. This will. So do you see some kind of problem in the diagram, or is it okay? उल्टा नहीं दिखाया हुआ सर. और ये फील्ड नीचे. Yes. वही कहने इसीलिए लगा था. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था. इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि the current should be flowing in this direction. That means understanding is clear. The right hand rule is clear. Now you are understanding. But one thing that you have noticed is that the current will be flowing athwartship, correct? Yes, sir. So water flowing forward aft, magnetic field up and down, the current either in port to starboard or starboard to port direction. Yes, sir. To pick up that current, we have got two electrodes placed athwartship direction around the flow sensor. The width of the flow sensor, is the, or cross section rather, पूरा area जो है बीच का पानी का, that is the conductor, and that will be showing the current. Conductivity of the water will make a role. The surface area, the two plates जो electrodes लगी हैं, उनके बीच का cross section जिसमें पानी है, that all will be participating in the current. So the current which is flowing is taken outside, and यहाँ पे एक galvanometer होएगा अगर लगा दें, तो we will be seeing the current. This current which is being generated will be zero if the water flow is zero, will be little bit more if there is slow flow of water. It will be further more if the current flows more, water flows more.
So if we plot a graph between the two, again, as we said, there is a constant relationship between the speed of the ship and the induced current. Now suppose, again, giving you two examples. There are two lines, एक ग्रीन एक रेड, दोनों में फर्क क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले केस में, रेड के केस में देखते हैं कि इतना करंट होगा, अगर इतना करंट है तो उसके रेस्पेक्ट में स्पीड इतना होगा। बट दूसरे के केस में देखते हैं कि इसी स्पीड पे करंट इतना आ रहा है, ऐसा क्यों? सर रेस्टर्न जा रहे हैं? नहीं, एस्टर्न जाते तो स्पीड इधर को दिखाती ना। The property of the magnet. एंगल चेंज हो गया। Yes, the length of the conductor, the strength of the magnetic field, those are the constants which will define the gradient of the graph. ये ऊपर वाले जो दिखा रहे हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब प्लेट्स की जो साइड है इलेक्ट्रोड्स की वो बड़ी होंगी, तो मोर कंडक्टर, मोर मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मोर ईएमएफ, तो थोड़े से स्पीड पे ज्यादा ईएमएफ होएगा। Right, sir. अगर मॉडरेट है, थोड़ा कम है, तो कम ईएमएफ जनरेट होगा उसी स्पीड पे। सो दिस आर द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट का फीचर जो है दैट इज द फैक्टर्स व्हिच आर इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया हमने, क्या साइज फ्लो सेंसर का है, उसमें फ्लो सेंसर में साइड की प्लेट्स जो इलेक्ट्रोड्स लगी हैं उसका सरफेस एरिया कितना है, all that will decide the constant, and in so doing the gradient of the graph. Actually the current which is generated is very small, actually small hota hai milliamperes mein, but best part is that it is constant. Whatever current is generated, this is equated with the speed of the ship. Environment, controlled environment में पहले हम टेस्टिंग करते हैं लैब्स में, वाटर फ्लो करवाते हैं, वाटर फ्लो करवा के देखते हैं इतना करंट निकला, बाद में रिवर्स कर देते हैं प्रोसेस को जहाज में कि इतना करंट है मतलब इतना फ्लो है, मतलब स्पीड थ्रू वाटर है। So that's basically the principle of operation of the EM log. That is just it, nothing very complicated. What you have to remember is the alignment of this flow sensor, alignment of the magnet, also that it is an electromagnet. And the alignment of the earthwardship alignment of the electrodes to pick up the current which is flowing through the water here. बीच में जो पानी में करंट फ्लो कर रहा है, to pick that up. So description of the same, please go through this quickly. ये तो हो गया, हाँ, operation of the EM log, just go through it. Next,
Next. Next. So here is what we have. Simple description, simple principle. Next. The description here which is given is about analog display, or analog display में नहीं, indicator बोलेंगे. That means what we are talking about is a dial जिसमें हमारा needle होगा, needle में 10 नॉट 15 नॉट जो भी स्पीड दिखानी होगी वो दिखाएगा. तो ये नीडल मूव कैसे करेगा? मूव करेगा एक मोटर से जो कि भीतर में फिटेड है, व्हाट वी आर कॉलिंग एज सर्वो मोटर. व्हाट इज दिस सर्वो मोटर? A special type of motor which can be controlled for its rotation. Given the kind of signal to the motor can be turned by a given degree. अगर कंट्रोल में हम उसको मूव कर सकते हैं. पंखे को ऑन करते हैं, जैसे ऑन किया तो धड़धड़ा के घूमना शुरू हो जाता है, बंद किया तो घूमता रहता है. सर्वो मोटर में वो नहीं होता. सर्वो मोटर में we can give a controlled kind of supply, और उसी सप्लाई के बेसिस पे वो थोड़ा सा घूमेगा और थोड़ा घूमेगा और थोड़ा घूमेगा, depending on the signal, and that is what is used to indicate the speed differently. So this is analog indicator, but this can very well be a display which is digital display. 7 segment display बोलते हैं इसको. 7 segment क्यों? क्योंकि 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3, 4, 5, 6 और 7 टुकड़े में होता है ये डिस्प्ले. तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं. इसी से 1 2 3 4 0 सब बनता है, 8 सब बनता है. The working explained by means of a block diagram. Very, very simple. There are 2 demarcations basically. एक अंडर वाटर है और एक ब्रिज में है. ब्रिज में जो डब्बा लगा हुआ है आपका मास्टर यूनिट, उससे 2 डिस्प्ले लगी हुई है. या तो हम स्पीड देख रहे हैं या डिस्टेंस देख रहे हैं. डिजिटल डिस्प्ले में दोनों साथ साथ में दिखाता है. नीचे में टोटल डिस्टेंस, ऊपर में करंट स्पीड दिखाएगा, तो स्विचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. What you can observe here is 1 ampere current through the coil. What is this?
Yes. Yes, sir. Please repeat. Come again. I couldn't hear you clearly. Can you repeat what was your question? My question is that you can see what is written here is 1 ampere current through the coil. What does it mean? So that is for this induction of the this coil for this electromagnet. Very good. Exactly. We have a flow sensor here. इसमें मैग्नेट का के लिए सोलोनॉइड होगा, उसमें करंट डालेंगे तभी वो मैग्नेट बनेगा. It is that. And then there is something coming out which is current proportional to the speed. This is picked up from the athwartship electrodes taken here, processed and converted into a display, either electronic display or analog indicator. Okay, sir. Now, limitations of the device. EM log में क्या-क्या limitations होगी? Now that you know also what are the kinds of speed that are there in the ship. Considering all that, think and find out the limitations of the device. कहाँ ये अटक रहा है, कहाँ limitations मतलब क्या कि ऐसे होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे होगा तो सही नहीं बताएगा. तो किन सब चक्करों में फंस जाता है ये जहां पे ये सही नहीं रहता. So salinity of the conductor for fresh Very water में. good. Bang on. अलग अलग जगह जाएंगे. बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टी बदल रही है. कहीं पे फ्रेश वाटर है, कहीं पे सॉल्ट वाटर है, कहीं हेवी सॉल्ट वाटर है, कहीं मॉडरेट सॉल्ट वाटर है. तो वी आर बेसिकली चेंजिंग द कंडक्टर. कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं हम. सिस्टम कांस्टेंट चेंज हो गया. यस सर. तो उसके चलते ग्राफ का जो ग्रेडियंट था वो भी चेंज हो जाएगा. तो कम स्पीड पे ज्यादा या ज्यादा स्पीड पे कम स्पीड बताएगा. सो नंबर 1 सैलिनिटी. वेरी गुड पॉइंट. बैंग ऑन. अगला थिंक सम मोर. The ship is like this. The flow sensor like this. The water passes like this. Yes, sir. The location of the sensor. Athwartship direction. Will it read current? Water flowing from the side. Will it read? No, sir. Another limitation. It cannot read athwartship speed. So in this what we see that when it is at 0 degree to the alignment of the flow sensor, we get maximum reading. When it is at 90 degree, we get 0 reading. So the values are changing from maximum to 0 on the Right side की right. angle of the flow of water. पेट्रोल पंप वाली साइड लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड. तो क्यों भी? अब गया नहीं है. अरे पहली क्लास में दे रही है नहीं ओदे ये पूरे आइया लंबाई रोड पर आ गया. Microphones, please mute it. नहीं सुन रहे. Okay, so as you can see at 0 degree maximum, 90 degree 0. So we are going to get only यार अगर कोई बोल सकता है तो बोलो. उनको बंद करने के लिए I can't see here. सर आप म्यूट कर सकते हैं सर, आपके पास है वो राइट. चलो मैं ही जाता हूँ. वैसे टाइम तो हो रहा है. रुको. कितने आने रुपए? 900 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣੇ 90 ਦਾ ਨਹੀਂ. 5 रुपए. 900 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ. ਡਿਸਕਾਊਂਟ
Okay, you're still able to see my screen? Sir, yes, sir. Okay. So if the water is flowing at a direction, at an angle, we only get a component of the speed. We don't get the full speed. Suppose ये 10 नॉट से अगर पानी फ्लो कर रहा है, तो we will get only if it is let us say 45 degree angle पे आ रहा है, तो we will get 10 cos 45 degree का speed is what we are going to get. Only a component we will get. We will not get the full speed. So another limitation is that it cannot read athwartship speed, and it will read only a component if it is at an angle. Two limitations. Number one, salinity of the water changes. The display has got an error. Athwartship speed not readable. Third one, it does not show speed over ground. As a speed indicator, we need to have both the speeds, but this is limited to only speed through water. It cannot show speed over ground. Yes, sir. Sir, in canals also it will show more speed because when there is less depth of water, the water will pass faster through the conductor and will show more speed. Exactly. Very good point again. Very good point again, because the speed will be affected by the shallow water effect. In shallow waters, the speed of the water under keel is faster, so it will show faster speed in the shallow waters, provided that the salinity remains same. अगर हम confined area में shallow water में हैं, वहां पे salinity कम हो गई है, तो कम salinity के चलते कम speed दिखाएगा, high speed of water के चलते ज्यादा दिखाएगा. हो सकता है न्यूट्रलाइज करके बराबर दिखा दे. Yes. सही है ना? Yes, sir. एक रीजन के चलते ज्यादा दिखा रहा है, दूसरे रीजन के चलते कम दिखा रहा है, दोनों बराबर इक्वल ऑपोजिट हो गए तो सब हो गया, तो वो सही दिखाएगा. Also, it may be possible that the ship is constructed in such a way and the location of the device is such that because of hull construction, the water generally passes at a faster or slow rate. क्योंकि Yes, sir. fitment will be close to the hull only. अब हल की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वहां पे पानी जो है स्टैग्नेंट होता है, थोड़ा सा रुक के पड़ता है, तो हमेशा कम स्पीड बताएगा. अगर ऐसे जगह पे है जहां पे बिकॉज ऑफ हल कंस्ट्रक्शन पानी थोड़ी तेजी से पास हो जाती है, तो डेफिनेटली वहां पे तेज बताएगा. सो दैट इज नोन एज बाउंड्री लेयर इफेक्ट. बाउंड्री लेयर इफेक्ट, एक शैलो वाटर इफेक्ट, एक बाउंड्री वाटर इफेक्ट. अथवाशिप नहीं रीड करता, एसओजी नहीं रीड करता, affected by salinity. So these are the limitations of EM log. Next, next,
Fourth point. The speed through water is also referred to as water track. एक होती है bottom track, एक होता है water track. These are the two terms used for SOG and STW. So we are very comfortable with using STW, SOG, but in the terminology of the equipment, it is called bottom track and water track. Bottom track, speed of ground, speed over ground. Water track means speed through water. Next. So with this we are done. एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको हम अगले बार अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. 10 मिनट 5 मिनट लगेगा हमें. So we'll discuss that. एक लास्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो लिमिटेशंस बात करी एसओजी नहीं देता, ये हमें चाहिए भी नहीं. एसओजी की कब जरूरत होती है? When we are in coastal waters, right? Coastal water में मुझको चाहिए क्या? Ground speed. तो नहीं देता तो मत दे. In general, ठीक है. दूसरे शिप से अगर देखना है तो चाहिए मुझको, so वहां पे required है. But we require speed through water out at sea, जहां पे collision avoidance देखनी है वहां पे ये दे ही रहा है. Speed through water देता है, मुझको collision avoidance के लिए चाहिए, मिल रहा है. एसओजी नहीं देता, ये मत दे. एसओजी चाहिए कब मुझको? नियर द कोस्टल एरिया, वहां पे मुझको चाहिए ये नहीं. स्पीड थ्रू वाटर नहीं चाहिए सोटू से. उसके लिए मेरे पास दूसरी डिवाइस है, डॉपलर लॉग. सो विल टॉक अबाउट दैट. सो दैट बीइंग डन, वी आर डन विद द ईएम लॉग एक्सेप्टिंग एक टॉपिक है व्हिच इज बेसिकली how the speed display is taken to remote locations. अलग अलग जगह में चाहिए. जैसे जायरो की रीडिंग मुझको रिपीटर स्टारबोर्ड में भी चाहिए, पोर्ट में भी चाहिए, ब्रिज फ्रंट में भी चाहिए. रिपीटर्स होते हैं, ऐसा ही रिपीटर इसमें भी होता है. तो एक ब्लॉक डायग्राम छोटा एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, तो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास.